और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। होमलेसनेस या जो बेगर होते हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में भी और यहाँ पे भी, कि लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए और फिर वो फूड और ये सब कैसे अफोर्ड करते हैं। तो इस पूरी जो प्रॉब्लम है बेगर वाली या होमलेसनेस वाली, इससे अमेरिका कैसे डील करता है वो जानने के लिए आज मैं पहुँचा हूँ आवर कॉलिंग नाम का एक शेल्टर, एक डे शेल्टर है उसमें। तो देखते हैं कि जो होमलेस लोग हैं उनको कैसी फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं और कैसे वो लोग डील करते हैं इस पूरी प्रॉब्लम से अमेरिका में। तो चलते हैं अंदर, जो वॉलंटियर जिन्होंने साइन अप किया मेरे साथ बात करने के लिए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल फैसिलिटी कैसी है। तो ये फैसिलिटी का टूर अभी मुझे दे रहे हैं जल्दी से कि आसपास क्या क्या इनकी फैसिलिटीज़ हैं। पीछे विमेंस सेंटर था जहाँ पे फीमेल्स वगैरह के लिए फैसिलिटी है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे लग रही है अंदर से। स्टाफ रूम वगैरह हैं काफ़ी और जो ओवरऑल फैसिलिटी वो हम देखते हैं कि कैसी होती है। Hello, how are you? We're doing a quick tour. When people drop donations off, this is where they will sort them out so that we can distribute them. So you see those are all different clothes that have come in and we're packaging them up and I'll show you where we give them out. So cool. This is where they come in and they get processed. And they get sorted and put into bins with the sizes and all. Sizing and like that. So ये इनका डोनेशन सेंटर है जहाँ पे क्लोथिंग की अरेंजमेंट होती है। So here's where the clothes from upstairs come down to here. And when people check in, they put an order for what they want. And then we have volunteers and staff will come and select the clothes to give them. So they will put them in a basket so that when people come through they can get that. Here's the washing machines, so where you can wash. Yeah. And here are the needs. Anytime we have needs, we list them. So you can figure that out. Cool. So वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह क्लीनिंग की फैसिलिटी है, यहाँ पे शावर फैसिलिटी है। And how much staff do you have? We have about 60 staff. 60, तो 60 लोग हैं इनके स्टाफ मेंबर में जो काम करते हैं। And what if I want to volunteer or weekend if somebody wants to volunteer? What we do is, you sign up online. We have an orientation, and then after the orientation, then we put you in a position and see what you like doing. That's amazing. तो यहाँ पे किचन है उनका। There we go. Wow. And we serve a meal every day to make sure people are well fed and all. Yes. So यहाँ पे वो किचन है जहाँ पे खाना बनाते हैं सभी लोगों के लिए और काफ़ी सारे लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लाइन है लंबी पीछे, तो इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है और कैसे वो लोग रन करते हैं उसको। दिस इज़ अमेजिंग। तो पहुँच गया हूँ मैं कॉन्फ्रेंस रूम में इनके और यहाँ पे मेरे साथ हैं चार्ल्स पाकर जो कि डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट है और कॉलिंग जो शेल्टर होम है या जो फैसिलिटी है उसके। एंड इनसे बात करते हैं इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में और हाउ ये कैसे इसको रन करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो सारी डिटेल्स अभी लेते हैं इनसे। सो हाय चार्ल्स। Hi. Thank you so much for allowing me to do this. Glad to have this discussion with you. Yeah, so I read about a lot of shelter homes in this area because I live literally in the Dallas downtown, and our calling was the one that has the best review on Google. So that's when I started calling. Like I decided to call you, and fortunately you picked up and you said you'll be glad if I do this. So this is amazing. Thanks. And I had a lot of questions. So one of them was, I read on the Google, and I don't know if it's right or wrong, but 0.5 million people are homeless in US. And my assumption on my part was that government gives funding to any organization that runs and help homeless people. So is that right or wrong? Well, it's there's several questions in your question. Okay. Yeah. So let's take the first question. We talked about the number of homeless people in the U.S. How the U.S. Government determines the number of people. We have what we call a point-in-time count, and they use an acronym, which is we take the letters. They call it a PIT count, point in time. So usually at least twice a year, most major metropolitan areas, and actually it's done all across the U.S. Do a point-in-time count where organizations that work with the homeless and volunteers go out and they count all the people in shelters, all the people they find in what we call encampments. I don't know if you've talked about that, where people live out on the streets. Anywhere they think they can find homeless people. And they come up with a number. And all those numbers are tabulated across the U.S. to give an estimate of how many people. And then there's some statisticians that kind of say, is that number high or low? And they give a margin of error that they believe in there.
So the number is anywhere between what you said, 500,000 and 1.5 million. As of late, over the past couple of years, the feeling has been, the general sense, I should say, not a feeling, but the general sense is that the number is rising in the US. And under current economic conditions, the forecast is that the number of homeless will continue to increase. So as you can see, I'm wearing a green shirt. Everyone at our calling wears green to kind of indicate to our homeless friends who we are. And anyone in a green shirt can essentially help get you off the street. Okay. So we have a number of caseworkers or care ministers whose sole role is to build relationships with our homeless friends and say, hey, you're getting your laundry done. It's going to take about 2 hours for us to finish it. Let's hang out. Like, we've got some coffee. Let's sit and talk. Tell me your story. How can I help you? And from there, we have 150 different solutions or pathways to getting someone off the street. जैसा कि उन्होंने बोला, हॉस्पिटल फैसिलिटी है या घर अगर किसी को चाहिए, सो इस तरह के जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं वो भी वो प्रोवाइड करते हैं. और लॉन्ड्री वगैरह की सर्विस है, शार लेना है, ये जितने भी काम है एक्स्ट्रा जो होते हैं, जब आपके पास घर नहीं होता तो आप कहाँ करेंगे, तो उसके लिए ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. एंड दे हैव अ लॉट ऑफ शेल्टर होम्स इन कनेक्शन, जहाँ पे वो सोने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देते हैं उनसे बात करवा के. बट यहाँ पे सोने की जगह नहीं है, बट कनेक्ट करवा के वो करवाते हैं. सो इस तरह से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करता है. सो दैट इज अमेजिंग. And yeah, we can talk about like hospital and all those needs. Yeah, I'm glad that you brought that up. Yep. So because our facility is so large as well, I haven't shown you around yet, but you'll see just how big it is. We like to act as kind of a one-stop shop for all of our homeless friends. So when you come here, 3 days a week, the local county hospital comes to our facility and they bring nurses, and so the nurses are able to provide different medical care, and it's great because it helps keep the hospital numbers down, and it also helps our homeless friends so that they don't have to try and figure out how to get to the hospital in order to get help. Absolutely. So that's an amazing one again. हॉस्पिटल से कांटेक्ट है तो वो हॉस्पिटल वाले यहाँ पे आ जाते हैं और वो पूरे जो होमलेसनेस में लोग हैं उनको चेकअप इन्हीं के इंस्टीट्यूट में कर देते हैं, और इस तरह से हॉस्पिटल का जो पेशेंट का नंबर है वो भी कम होता है. जो होमलेस पेशेंट्स हैं उनका केयर अच्छे से हो पाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट. एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग देयर इज़ नो चार्ज फॉर एनीबody, बट इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर एनीबody टू कम हियर? No, so specifically at our facility, we're called an open barrier facility. So you don't have to have an ID in order to walk in. Okay. You don't have to have an appointment to walk in. You don't have to have a bed like at shelters. You could literally just walk on in, go to the bathroom and leave, or Okay. you could walk on in and spend all day with us. And it's Okay. really that's an awesome opportunity for us to build relationships with our friends. And by the time somebody just walks in, it is guaranteed that at least he or she will get food and basic services, which is really great for anyone. Yeah, so there's no questions here in terms of if you want food, we'll give you food. If you need a shower, we can give you a shower. Everything else it's all optional, especially when it comes to us, you allowing us to help you off the street. So most of our friends want that and they say absolutely, like, let's figure it out. Others are like, you know what, I'm not ready yet. I really just, I'm hungry. Give I me want food and lunch. I want to leave. hang out. And that's kind of the tricky part of working here, is that sometimes we can talk to someone for 10 minutes and they are ready to get off the street. And then other times we have to build that trust with an individual, and it could take a year before someone says, all right, let's do it, I'm ready. Okay. Does our calling or any type of this type of facility helps homeless people in getting like free from unemployment? So do you also provide like employment to them? तो मेरा क्वेश्चन है कि उनको काम भी दिलाते हैं या सिर्फ फूड और ये सर्व करते हैं? एंड फॉर हाउ मेनी डेज यू बेसिकली कीप सर्विंग एन इंडिविजुअल फूड बिफोर दे आर लाइक, is there any like a limit where you say, okay, a month we can provide, but then you have to either work with us or work somewhere, we'll provide you work, or is that kind of criteria is there or no?
No, there's no criteria there. We know individuals who have been coming to our facility for literally the last 10 years. Okay. And we love on them and we see them every single day and we feed them and build relationships with them, but we're never going to say, you're still homeless, yeah. it's time for you to leave. Okay. And we have relationships with 150 different groups and agencies around the country. So although we might not be able to give someone a job specifically, we can connect them to someone else who has the ability to work on them with their resume and interviewing skills and help them get a job. So yeah, that's what's really important, because giving them food every day is really great, but then providing them employment or something like that will transform their life in reality. So. Exactly. Employment's really important, and for a lot of our friends, they also struggle with addiction, whether that be alcohol, drugs, or both. And so one thing that we've learned is that rehab and understanding and maintaining, understanding and breaking away from your addictions is also really important to getting out of homelessness as well. That's amazing. So जॉब दिलाने में भी जैसा उन्होंने बताया कि हेल्प करते हैं वो लोगों की. So दिन में फैसिलिटी, फूड एंड उसके अलावा आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाती है, रिहैब वगैरह की सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी. एंड पिछले शेल्टर में जहाँ मैंने एक बार बात की थी, उन्होंने बोला था कि उनकी हार्ड लिमिट है 14 डेज़. 14 डेज़ के बाद आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. जैसा उन्होंने बताया 10 साल से उनके पास कोई इंडिविजुअल आ रहे हैं जो रोज़ आते हैं, शार लेते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं. इनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट में ज़रूर हेल्प करेंगे और कॉन्स्टेंटली बात करके आपको मोटिवेट करते हैं कि आप होमलेसनेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं. तो वो बहुत एक अच्छा आइडिया है. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सो वो थोड़ा सा अलग है, बट इस तरह का काम ये लोग करते हैं यहाँ पे. और ये उनकी ऐप है जिसके बारे में वो बता रहे थे. तो अपनी लोकेशन के साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि आसपास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और शेल्टर है, मेडिकल है, कोई भी फैसिलिटी अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं. और अगर कोई होमलेस है जिसके पास फ़ोन है तो वो इसमें लोकेट कर सकते हैं कि आसपास क्या अवेलेबल है और क्या ओपनिंग आवर्स हैं. तो फूड कहाँ पे मिल सकता है, मेडिकल फैसिलिटी कहाँ मिल सकती है, रहने की जगह कहाँ मिल सकती है, वो पूरा इस ऐप के थ्रू उनको पता चल जाएगा. और क्या डिस्टेंस है, और बसेस वगैरह भी इनकी चलती हैं तो वो डिस्टेंस कवर करने में भी हेल्प करती हैं. और अगर आप इनकी ऐप रखते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि आसपास क्या फैसिलिटी है, ताकि अगर कोई होमलेस है जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. सो अमेजिंग ऐप है इनकी, एंड काफ़ी अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं. तो मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ से इनका सोल्यूशन काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी रिच सोल्यूशन है कि ऐप होना और इस तरह की फैसिलिटी इतनी बड़ी होना. तो वो तो हमारे यहाँ तो अभी तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि है, या छोटी छोटी जगह पे नहीं होता है, बट यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट इन्होंने सोल्यूशन ले रखा है. थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड गिविंग अ टूर ऑफ द फैसिलिटी. दिस इज रियली गुड. एंड या चार्ल्स, थैंक यू. Thank you. I'll take a leave now. Okay. Do you know where did you park, in the front? I brought in the back. Okay, I'll show you the way out. Yeah. Confusing to get around. That's why I just figured. Oh yeah, that's where I entered. That's where you entered. So here Yeah. you go. And here you go. Oh, so I'm out. Yep. Yep. All right. Thank you again. Thank it you. was really great talking All right. to you. And yep, have a good one. All right, you the same. Thank you. तो ऐसा रहा मेरा टूर. आपने देखी फैसिलिटी और किस तरह से वो लोग, आप मतलब देख रहे हैं फैसिलिटी कितनी बड़ी है और होमलेस लोगों की जो प्रॉब्लम है वो कैसे ये लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो काफ़ी डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा. एक शेल्टर होम और डे शेल्टर होम के बारे में भी जाना, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अभी मैं निकलूँगा घर की ओर. मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.